Assalamu alaikum. Today we will do exercise 4b and book D3 8th edition, and some of the rules we have already done when the variables are same, so we can add their powers. But what if the power is 0? When the power is 0 on any number or any variable, so the answer is always 1. So let's start with the first question, number 1. Okay, the rule is that whenever any variable containing a power 0, its answer is always equal to 1. It's not necessary that x is any variable. It can be any number, anything. Whenever on anything the power is 0, so its answer is always equal to 1. So part A answer is simply 17 power 0. So 17 power 0 mean the answer is equal to simply 1. Part B is minus 2 by 7 minus 2 by 7 whole power 0, and its answer is also 1 because this 0 is on this complete on the whole one, so that's why its answer is 0. It's 2 by 7. ओके जी, पार्ट सी में अब आपके पास है इट्स 4a power 0. Now on 4 it's not the power, that means 4 will remain as it is, and because on a power 0 they are multiplying with each other, so instead of that I have to write 1, so answer is 4. You can directly write down the answer, I am just explaining, so that's why I have to little bit elaborate it. Part D is, you can see that it's minus 8 and b power 0, so minus 8 will remain as it is. b पे पावर 0 है, सो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. सो माइनस 8 मल्टीप्लाई विद 1, सो ऑब्वियसली द आंसर इज़ माइनस 8. अब पार्ट ई पे आप देखेंगे कि ब्रैकेट के ऊपर है 0. आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि वेयर द 0 इज़. इट्स 72c d² and on that whole power is 0. When the whole power is 0, so that mean the complete answer is equal to 1. It's simple. Part F is when there is a double power. Obviously जब भी डबल पावर है तब भी हमारे पास 0, क्योंकि 7 है, उसके ऊपर e है, e के ऊपर पावर आपके पास 8 है, और उसके बाहर आपके पास क्या है, पावर 0 है. So that means this complete term will become 1, and 7 into 1 the answer is 7. So moving towards question number 2. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अगेन द कैलकुलेटर. हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, तो हम वही वाली अपनी चीज़ जो है वो यूज़ करते हैं. अच्छा जी, पार्ट ए में आपके पास है 2 power 0 एंड 2 power 4. आप अपना आंसर अपना आइदर यू कैन यूज़ इन इंडेक्स नोटेशन, और आप एज इट इज़ भी अपना आंसर लिख सकते हैं. सो 2 power 0 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ. 2 power 4 का मतलब क्या हुआ, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So 16 into 1, your answer is 16. Clear? Moving towards part B में आपके पास आ जाता है 7 power 2 multiply with 7 power 0 divided by 7. अच्छा जी, either you can use BODMAS rule या आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. 7 power 2 is 49, 7 power 0 is 1, and because this is divided by 7, so divided by 7 आप as it is लिख लेंगे. So 79 multiply with 1 is 49, multiply with 1 is 49, and 49 divided by 7, so my answer is 7 from here. Part C is, it's minus 8 power 0, so minus 8 power 0 will remain as it is, minus 8 square. अब इसमें आपने ज़रा चीज़ों का ख्याल रखना, साइंस का ख्याल रखना है. जहाँ पे डिमास रूल्स अप्लाई हो रहे हैं आपने वो यूज़ करने. 8 power 0 से आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज ये माइनस भी इंक्लूडेड है, सो इसलिए वो उसी में ही 1 आ जाएगा. माइनस 8 power 16, 8 power 2 is 64. क्लियर? So when it is 64, so 1 minus 64, the answer is minus 63. ओके जी, द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट डी, एंड पार्ट डी में आपके पास आ जाता है जनाब, इट्स 3 power 3 plus 3 power 0
minus 3. So 3 power 3 से 3 3s are 9, 9 3s are it's 27. 3 power 0 is 1 minus 3. So 27 plus 1 is 28 and 28 minus 3 is 25. So this is how you will solve your question. This is the end of this question number 2. See you in the next video. Till that, Allah Hafiz.